Alright students, now let's start with the different types of price elasticity of demand. What do you exactly mean by price elasticity of demand? It is measuring the response of demand to a change in price only. Now before we proceed, just keep two things in mind. Number one, अगर प्राइस बदला और डिमांड ज़्यादा बदला, डिमांड ने रिस्पॉन्स ज़्यादा दिया, उसको बोलते हैं इलास्टिक. और अगर प्राइस बदला, डिमांड कम बदला, डिमांड ने रिस्पॉन्स कम दिया, उसको बोलते हैं इनइलास्टिक. So elastic is when demand responds more to a change in price, and inelastic is when demand responds less to a change in price. Now let's proceed. These are the 5 types of elasticities of demand which are there on your screen behind. Let's start with the first one, unitary elastic demand. बच्चे ऐसा बोल सकते हो कि when a percentage change in quantity demanded is exactly equal to the percentage change in price. जितना प्राइस बदला डिमांड ने भी उतना ही रिस्पॉन्स दिया. जैसे लुक एट द स्क्रीन, एग्जांपल दिया हुआ है. सपोज प्राइस 20% से बदला और डिमांड भी 20% से ही बदला, तो जितना प्राइस चेंज हुआ है डिमांड ने भी उतना ही रिस्पॉन्स दिया है. इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. इन दिस केस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1. गाइस, इफ यू लुक एट द डायग्राम ओवर हियर, लुक एट द डायग्राम. प्राइस 20% से फॉल हुआ, सामने डिमांड भी 20% से ही बढ़ा. जितना प्राइस चेंज हुआ है डिमांड ने भी उतना ही रिस्पॉन्स दिया, न ज़्यादा न कम. इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. नेक्स्ट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड. यू कैन से व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. बेटा इनइलास्टिक है. इनइलास्टिक का मतलब क्या है? डिमांड रिस्पॉन्स लेस टू अ चेंज इन प्राइस. एग्जाम्पल देखिए, the price changes by 50% and demand changes only by 20%. तो यहाँ पे डिमांड ने रिस्पॉन्स दिया बट थोड़ा. In this case, elasticity is less than 1. If you look at the diagram, ध्यान से देखिए, प्राइस चेंज हुआ है 50% से, प्राइस फॉल हुआ है 50% से. सामने हमारा जो डिमांड बढ़ा है वो सिर्फ 20% से ही बढ़ा है. तो प्राइस चेंजिंग बाय 50%, डिमांड चेंजिंग ओनली बाय 20%, मतलब the quantity demanded is responding less to a change in price. That is called as relatively inelastic demand. Next type over here is relatively elastic demand. Elastic matlab response more. Say if you look at the statement, when the percentage change in quantity demanded is greater than the percentage change in price, so demand is responding more to a change in price. For example, price changes by 20% and demand responds by 100%. इस पर डिमांड का रिस्पॉन्स ज़्यादा है टू अ चेंज इन प्राइस. इसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. इन दिस केस जो हमारा इलास्टिसिटी होगा इट विल बी ग्रेटर देन 1. नाउ लुक एट द डायग्राम. प्राइस फॉल्स बाय 20%, डिमांड राइजेस बाय 100%. तो यहाँ पे डिमांड इज रिस्पॉन्डिंग मोर टू अ चेंज इन प्राइस. दैट्स कॉल्ड एज रिलेटिवली elastic demand. Let's go to the next type, perfectly elastic demand. बेटा ऐसा बोल सकते हो, when a small change in price brings an infinite change in quantity demanded. For example, say हमारा प्राइस है 10 और डिमांड है 100. हमारा प्राइस थोड़ा सा फॉल हुआ to 9 rupees 99 पैसा. It's a small fall, it's a negligible fall, and demand infinitely बढ़ गया. तुम सोचोगे सर ऐसा थोड़ी ना हो सकता है. ऑब्वियसली ऐसा हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है. इसीलिए दिस इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट. इट कैन नॉट ऑकर इन रियलिटी. नाउ इन दिस केस लुक एट द स्क्रीन. पॉइंट नंबर 2, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी. और बेटा यहाँ पे जो डिमांड कब होगा, इट विल बी हॉरिजॉन्टल, स्ट्रेट लाइन, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. Now the next type over here is perfectly inelastic demand. अब यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो कि प्राइस चेंजेस बट इट डज नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. प्राइस कितना भी बढ़े या कितना भी कम हो, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा. इन दिस केस अवर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0. दैट इज इनइलास्टिक. डिमांड रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा तो इलास्टिसिटी 0 ही होगा ऑब्वियसली. Now if you look at the diagram, just look at the diagram. यहाँ पे the demand curve is a straight line, vertical, parallel to y-axis. This clearly indicates, ध्यान से देखो बेटा, price suppose है P2 and demand is OQ. अब यहाँ पे प्राइस बढ़े या प्राइस कम भी हो, डिमांड रिमेन्स द सेम, डिमांड रिमेन्स OQ. सो डिमांड यहाँ पे रिस्पॉन्स जरा भी नहीं दे रहा. इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक
तो गाइस 5 टाइप्स हमने देख लिए. सबसे पहला था यूनिटरी इलास्टिक, where the percentage change in quantity is equal to percentage change in price. Then we studied very important, elasticity is equal to 1 in this case. Then we studied relatively inelastic demand, where demand responds less to a change in price, percentage change in quantity is less than percentage change in price, and elasticity is less than 1. Then we studied relatively elastic demand. Elastic matlab response more. यहाँ पे the percentage change in quantity is greater than the percentage change in price, and elasticity is greater than 1. So students, these are the 5 types of price elasticity of demand, and I hope the concept is very clear to all of you. Thank you very much.